Assalamu alaikum students, I am Wasim Ikram. This is the 11th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. कैसे हैं आप? इंशाल्लाह अच्छे होंगे. लास्ट टाइम हमने बात की थी के मैप की. के मैप बनाते कैसे हैं, एक्सप्रेशंस उसमें कैसे मैप कैसे करते हैं और फिर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं. उसमें कॉन्सेंट्रेट हमने किया था सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस पे. आज हम बात शुरू करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस. सम ऑफ प्रोडक्ट्स पिछली दफा किया था, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस से आज बात शुरू करेंगे. जिस तरह आप सम प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस मैप कर सकते हैं के मैप पे और फिर ग्रुपिंग कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी आप डायरेक्टली मैप कर सकते हैं के मैप पे. उसी तरह ग्रुप्स बनाएंगे, उसी तरह आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होगी जो अल्टीमेटली आप गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें. So before we start our discussion on mapping standard product of sum expressions onto a K-map, let us quickly revise the topics which we did last time. Last time basically हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी के मैप से. वी हैव 3 वेरिएबल के मैप्स, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 5 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. उसमें 3, 4, 5 वेरिएबल के मैप्स क्यों यूज होते हैं? बेसिकली टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशंस हैविंग 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स एंड 5 वेरिएबल्स. दो तरीके हमने देखे थे टू स्पेसिफाई 3 वेरिएबल के मैप. रो फॉर्मेट भी हो सकता है, कॉलम फॉर्मेट भी होगा. 3 वेरिएबल के मैप में और कॉर्न ऑफ मैप में बेसिकली 8 सेल्स हैं रिप्रेजेंटिंग 8 मिन टर्म्स या 8 मैक्स टर्म्स. इसी तरह जो 4 वेरिएबल के मैप है, कॉर्न ऑफ मैप है, उसमें 16 सेल्स हैं. इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 rows and 4 columns. Of course, each of those 16 cells represent 16 min terms या 16 max terms of that expression. Next हमने ये कहा था, having shown the kernel of maps, उनमें हमने कुछ information डालनी है. कैसे डालेंगे? बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्म्स में एक्सप्रेशन होती हैं. एक जो फॉर्म है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो एक्सप्रेशन है उसमें डिफरेंट मिन टर्म्स होंगे. तो जो भी मिन टर्म्स आपके पास हैं उनको करस्पॉन्डिंग सेल्स में एज 1 मार्क कर दें. जो मिन टर्म्स नहीं है वो 0 होंगे. सो आफ्टर हैविंग मार्क द के मैप, अप्रोप्रिएट के मैप 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन, अब क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे. सो यू फॉर्म ग्रुप्स. यू स्टार्ट बाय फॉर्मिंग द लार्जेस्ट ग्रुप. सो आप अगर लेट्स से 3 वेरिएबल का के मैप है, द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप विच यू कैन फॉर्म इज ग्रुप ऑफ 8 सेल्स. सो 8 सेल का होगा. उसके बाद आप कोशिश करेंगे 4 सेल का कोई अगर ग्रुप बन जाए, फिर 2 सेल का और 1 सेल का. ग्रुप्स हमने बताया था देयर इज नो लिमिट के कितने होने चाहिए. जितने भी आपके पास वंस हैं और वो ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं तो उतने ग्रुप्स बन जाएंगे उसमें. अब जरूरी नहीं है कि 3-4 ग्रुप्स जो हैं वो अलग-अलग से हों, कुछ ओवरलैप भी कर रहे होते हैं. पर उनमें से एक चीज आप याद रखिएगा, डिफरेंट ओवरलैपिंग जो ग्रुप हैं उनमें से एटलीस्ट एक सेल ऐसा होगा जो दोनों में नहीं है. राइट? इसीलिए आप 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप बन रहे हैं ना. अगर कोई एक वन जो है दोनों ग्रुप में है तो ऑफ कोर्स डिफरेंट ग्रुप बनाने का सवाल नहीं पैदा होता. सो बेसिकली आफ्टर हैविंग मैप द के मैप्स, ग्रुप बनाया. ग्रुप्स जो हैं बेसिकली आपको प्रोडक्ट टर्म, सिंपल प्रोडक्ट टर्म्स दे रही हैं. राइट? उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में तो फिर कैसे करेंगे? आपके पास नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन है. तो बेसिकली 2 तरीके हैं. या तो उसको स्टैंडर्डाइज कर लें, वही जो रूल हमने पढ़ा था a+a बार यूज करते हुए स्टैंडर्ड आ जाएगी. स्टैंडर्ड जब एक्सप्रेशन आ गई आप मैप कर दें के मैप में. अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली भी जो नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन है वो के मैप में मैप कर सकते हैं. उसमें वो कैसे? बेसिकली आपने लेट्स से पहली टर्म उठाई, वो आप टर्म जो है के मैप में जहां जहां भी जो भी सेल्स हैं जिनमें वो टर्म कॉमन है या नजर आ रही है वो उधर आप 1 मार्क कर देंगे उसमें. सो अल्टीमेटली जितनी भी नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स हैं आपके सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में वो आपने वंस के तौर पे मार्क कर दी के मैप में. उसके बाद वही प्रोसेस है, ग्रुप्स बनाएं. ग्रुप्स जो हैं आपको एक सिंपल प्रोडक्ट टर्म की सूरत में एक एक्सप्रेशन दे देगा. उसके बाद हमने बात की थी कि ट्रुथ टेबल जो है बेसिकली जब भी आप कोई सर्किट बनाते हैं उसका पहले आप फिक्स फंक्शन टेबल या ट्रुथ टेबल बनाते हैं जिसमें इनपुट्स दिए होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स दिए होते हैं.
اگر آپ کے پاس ٹروتھ ٹیبل ہے یا فنکشن ٹیبل ہے دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو فرسٹ رائٹ این ایکسپریشن اور پھر اس کو میپ کریں. آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو میپ کر سکتے ہیں کے میپ میں. ٹھیک ہے, تو لیٹس سے 8 ان پٹ کمبینیشن, بیسکلی 3 ویریبلس ہیں, اس کے 8 آؤٹ پٹس ہوں گے. کے میپ کون سا یوز کریں گے؟ 3 ویریبل کا کے میپ یوز کریں گے. سو ہر ان پٹ کمبینیشن کی ہر جو آؤٹ پٹ ہے 1 اور 0 ہوں گے, وہ ڈائریکٹلی آپ کے میپ میں میپ کر دیں. اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہی آپ دوبارہ گروپنگ فارم کریں گے, ایک ایکسپریشن آ جائے گی آپ کے پاس. لاسٹ جو ٹاپک ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا, ڈونٹ کیئر اسٹیٹس. لیٹس سپوز آپ کے پاس کوئی ایک 5 ویریبل کا یا 6 ویریبل کا کوئی سرکٹ ہے, 5-6 ویریبلس ایکسپٹ کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ویریبلس یوز نہ ہو رہے ہوں. پھر کیا کریں گے؟ اس میں بیسکلی ہم نے کہا تھا ان ان یوز اسٹیٹس کو ڈونٹ کیئر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو جو ان یوز اسٹیٹس ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ بیسکلی وہ ڈونٹ کیئر اسٹیٹس ہیں. آؤٹ پٹ میں ادھر ہم 1 بھی مارک نہیں کرتے, 0 بھی مارک نہیں کرتے, ادھر ہم ایکس سمبل ڈال دیتے ہیں. اس میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جب اس پورے فنکشن ٹیبل کو ہم میپ کر رہے ہیں کارن آف میپ میں, تو ادھر ہمارے پاس سیلز میں زیروز بھی آئیں گے, 1s بھی آئیں گے اور ایکس بھی آئے گا. نیکسٹ جب اسٹیپ ہوتا ہے سمپلیفائی کرنے کے لیے, ہم نے گروپس بنانے ہیں. سو ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک بڑا گروپ بن رہا ہے بائی سیٹنگ دوز ایکسز ٹو 1s, دین وی ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, سو لیٹ سپوز اگر ہم ایکس کو 0 رکھتے تو ہمارا گروپ 4 کا بن رہا ہے. اس میں اگر ان ایکس کو ہم 1 کر دیں تو 8 کا گروپ بن رہا ہے. سو وی ول سیٹ دوز ایکسز ٹو 1s اور ایک 8 سیل کا ایک گروپ بن جائے گا, جو ہمارے پاس ایک سمپلر پروڈکٹ ٹرم دے دے گا. سو ان سمری جو کراس ہیں, جو ڈونٹ کیئر اسٹیٹس ہیں, ان کو 0 سے بھی ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے, 1 سے بھی کیا جا سکتا ہے, ڈیپینڈنگ اپون دی انفارمیشن ان دی کارن آف میپ. سو یہ تو تھی بات پچھلے لیکچر کی. ٹوڈے وی اسٹارٹ ود میپنگ دی پروڈکٹ آف سم فارمز آف ایکسپریشن ڈائریکٹلی انٹو دی کے میپ, اور ادھر سے سمپلیفائی کیسے کریں گے. اس میں جنرلی طریقہ وہی ہے جو آپ نے سم آف پروڈکٹ فارم کی ایکسپریشن کے ساتھ یوز کیا تھا. اوکے, لیٹ اس جسٹ ریکال دی پروڈکٹ آف سم فارم آف ایکسپریشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی پروڈکٹ آف سمز ہم نے کیا تھا. سو آپ کے پاس سم ٹرمز ہیں, ان کو آپ نے ساروں کو اینڈ کر دیا ہوا, رائٹ. نا اسٹینڈرڈ اگر آپ کے پاس پروڈکٹ آف سم ایکسپریشن ہے, اس میں جو یہ سم ٹرمز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بیسکلی ان کو میکس ٹرمز کہتے ہیں. اس میں سو آپ کے پاس اسٹینڈرڈ جو پروڈکٹ آف سم فارم آف ایکسپریشن ہے, اس میں آپ کے پاس میکس ٹرمز ہیں. سو اگر آپ کے پاس 3 ویریبل ایکسپریشن ہے پروڈکٹ آف سم فارم کی, اس میں کتنے میکس ٹرمز ہو سکتے ہیں؟ میکسیمم 8 ہو سکتے ہیں. اسی طرح 4 ویریبل کی پروڈکٹ آف سم ایکسپریشن ہے, اس میں کتنے میکس ٹرمز ہو سکتے ہیں؟ 16 ہو سکتے ہیں. اس میں نا اٹ از پاسبل, ویل نارملی سارے میکس ٹرمز نہیں ہوتے کسی ایکسپریشن میں, پہلے 2 ہوں گے یا کوئی اور ڈفرنٹ کمبینیشن ہوگی. اب یہ جو میکس ٹرمز ہیں ان کو کیسے آپ میپ کریں گے کے میپ میں؟ بیسکلی لیٹس جسٹ کنسیڈر این ایگزامپل. لیٹ اس سپوز دیٹ یو ہیو اے 2 ویریبل ایکسپریشن جس میں ان پٹس ہیں 0 0 0 1 1 0 1 1. اس کی پہلی جو ٹرم ہے, میکس ٹرم جو ہے a پلس b, رائٹ. یہ ایک سم ٹرم ہے اور یہی آپ کے ایکسپریشن میں پریزنٹ ہے, رائٹ. اب اس کو آپ کے میپ میں کیسے ایکسپریس کریں گے؟ Now, if you remember, min terms جو ہیں وہ آؤٹ پٹ میں کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ 1s کی صورت میں. میکس ٹرمز جو ہیں وہ آؤٹ پٹ میں کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ 0 کی صورت میں. سو جسٹ ریمبر دس, وین یو میپ اے پروڈکٹ ٹو سم ایکسپریشن ان دی کے میپ, تو جو بھی میکس ٹرم پرزینٹ ہے اس کو آپ ایز 0 مارک کریں گے کورسپونڈنگ سیل میں, جو کے میپ کے سیل میں, رائٹ. سو یہ جو ایگزامپل ہم نے دی تھی 2 ویریبل کی, پہلا میکس ٹرم جو ہے وہ موجود ہے, باقی میکس ٹرمز نہیں ہے. سو کون سا سیل جو ہوگا جس میں آپ 0 مارک کریں گے؟ سیل جو ہے اے بار بی بار. باقی جو ہے سارے سیلز کیا کریں گے جن میں میکس ٹرمز نہیں ہے, وہ سارے 1s کر دیں گے اس میں. سو آفٹر ہیونگ میپڈ دی ایکسپریشن, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیسکلی اب گروپنگ پہ آ جائیں گے. So before we have a look at the grouping thing, let us map the standard product of sum expression onto a K-map. So let us have a look at some examples. Consider the standard
product of sum expression having a domain of 3 variables. What is the size of K-map or the Karnaugh map which you would use to simplify this expression? Now, since the domain is of 3 variables, therefore you would be using a 3-variable Karnaugh map. Now, by looking at the expression which has 4 sum terms, a plus b plus c bar, the second term has the variables a plus b bar plus c, the third term has the variables a bar plus b plus c bar, and the last and the fourth term has the variables a bar plus b bar plus c bar. Now, the max terms are represented by 1, 2, 5 and 7 in the function table. The cells representing the 4 max terms are marked with zeros, remaining cells are marked with ones. Now, you need to remember this: whenever you map max terms onto a K-map, you mark the present max terms with zeros. जो max terms expression में नहीं है, they are marked with ones. This is opposite to what you do with sum of product expression, जिसमें जो min terms present होते हैं उनको 1 से mark करते हैं, जो नहीं होते हैं उनको 0 से करते हैं. Now, similar to that sum of product expression, इसमें भी कोई भी आप K-map यूज कर सकते हैं, कॉलम फॉर्मेट या रो फॉर्मेट, दोनों से आंसर एक ही आएगा. पिछले लेक्चर में जिस तरह हमने बात की थी, नॉन स्टैंडर्ड जो है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं के मैप्स पे. इसी तरह आप नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स जो हैं आप के मैप पे मैप कर सकते हैं. इधर हम डिस्कस नहीं करेंगे, विद एक्सपीरियंस यू कैन यूज देम. थोड़ा सा डिफिकल्ट है जरा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स को के मैप में प्रेजेंट करना, बहरहाल आप कर सकते हैं उसमें. Okay, now having mapped a product of sum expression onto a K-map, next step क्या करना है, बेसिकली वही ग्रुप्स फॉर्म करने हैं. उसमें ग्रुप्स आप किस साइज के फॉर्म करेंगे और किन सेल्स को यूज करेंगे. बेसिकली द प्रोसीजर इज द सेम. यू वुड फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 8, 4, 2, 1 मल्टीपल्स ऑफ 2. 4 वेरिएबल का K-map है, देन यू कैन फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ 16 सेल्स. लास्ट टाइम जब हमने बात की थी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, ग्रुप्स जो आपने बने थे 1 के ग्रुप्स बनाए थे. इस केस में प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आप ग्रुप्स बनाएंगे 0 सेल्स के. जिन सेल्स में जीरोस हैं उनकी ग्रुप्स बनाएंगे, उसमें वंस जो हैं उनको छोड़ देंगे इसमें. सो ग्रुप्स अगेन जो हैं दे कैन बी फॉर्म्ड रो वाइज, कॉलम वाइज, दे कैन बी स्क्वायर, दे कैन बी रेक्टेंगल. एंड जैसे हमने बात की थी प्रोडक्ट पावर ऑफ 2 होना चाहिए, सो 6, 12, 14 टाइप के ग्रुप नहीं होंगे उसमें. सो लेट अस हैव a look at some examples which show us how we can form groups for different expressions. Consider a 3-term product of sum expression mapped to a 3-variable column-based Karnaugh map. A single group of 2 cells and a group of 1 cell are formed. The first group of zeros comprising of cells 0 and 4 forms the sum term b plus c. The second group comprising of cell 3 forms the sum term a plus b bar plus c bar. The simplified product of sum expression has 2 terms. How many terms did the original expression have? Basically, you see 3 zeros in the Karnaugh map, so the original expression had 3 max terms. The simplified expression has basically 2 sum terms. Consider now the 4-term product of sum expression mapped to the 3-variable row-based K-map. 3-variable row-based K-map क्यों यूज कर रहे हैं? बेसिकली हमारे पास 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है, so you don't need to use a 4-variable K-map. 2 groups of 2 cells each and a third group of single cell are formed. The single cell group comprising of cell 0 forms the sum term a plus b plus c. The second group of zeros comprising of cells 5 and 7 forms the sum term a bar plus c bar. The third group of zeros comprising of cells 6 and 7 forms the sum term a bar plus b bar. Now, the product of sum expression, which has been simplified, has
three sum terms, a plus b plus c, the second term a bar plus c bar, the third term a bar plus b bar. اوریجنل ٹرمز کتنی تھیں, کتنے میکس ٹرمز تھے اوریجنل ایکسپریشن میں؟ 4 میکس ٹرمز تھے. کیسے پتا لگ رہا ہے؟ کے میپ میں اگر آپ دیکھیں آپ کو 4 زیروز 4 سیلز میں نظر آ رہے ہیں. کنسیڈر another example of a 3 variable product of sum expression. It has to be simplified, so a 3 variable Karnaugh map is used. Now 2 groups of 2 cells are formed. The first group of zeros comprising of cells 0 and 1 form the sum term a plus b. The second group of zeros comprising of cells 0 and 4 forms the sum term b plus c. Now the simplified expression has only 2 sum terms, a plus b and b plus c. The original expression, as can be seen from the Karnaugh map, had 3 max terms. So of course the expression has been simplified. Consider the 3-term product of sum expression mapped to the 3-variable row-based K-map. One group of 2 cells and another group of single cell are formed. The first group of zeros comprising of cells 0 and 1 forms the sum term a plus b. The second group comprising of cell 6 forms the sum term a bar plus b bar plus c. How many terms does the simplified expression have? Only 2 sum terms, a plus b and a bar plus b bar plus c. How many terms did the original expression have? 3 terms, specified by zeros in 3 cells. Now consider an example of a 4-variable K-map. Consider the 5-term product of sum expression mapped to the 4-variable K-map. 3 groups of 2 cells are formed. The first group of zeros comprising of cells 4 and 5 forms the sum term a plus b bar plus c. The second group of zeros comprising of cells 0 and 4 forms the sum term a plus c plus d. The third group of zeros comprising of cells 2 and 10 forms the sum term b plus c bar plus d. So the product of sum expression simplifies to 3 terms, 3 sum terms, a plus b bar plus c, a plus c plus d and b plus c bar plus d. How many terms did the original expression have? Basically 5 max terms, which are indicated by 5 zeros in the Karnaugh map. Consider another example of a 4-variable K-map used for mapping products of sum expressions. The 8-term product of sum expression is mapped. 2 groups of 4 cells and 1 group of 2 cells are formed. The first group of zeros comprising of cells 0, 1, 4 and 5 forms the sum term a plus c. The second group of zeros comprising of cells 1, 5, 9 and 13 forms the sum term c plus d bar. The third group of zeros comprising of cells 2 and 10 forms the sum term b plus c bar plus d. The product of sum expression that has been reduced has 3 sum terms, a plus c, c plus d bar, b plus c bar plus d. How many max terms did the original expression have? It had 8 terms specified by zeros marked in the K-map. Consider the last example of the use of a 4-variable K-map to map product of sum expression. 3 groups of 2 cells and 1 group of a single cell are formed. The first group of zeros comprising of cells 4 and 5 forms the sum term a plus b bar plus c. The second group of zeros comprising of cells 5 and 7 forms the sum term a plus b bar plus d bar. The third group of zeros comprising of cells 1 and 9 forms the sum term b plus c plus d bar. The fourth group comprising of cell 14 forms the sum term a bar plus b bar plus c bar plus d. So the 6-term product of sum expression, having of course 6 max terms, is reduced to a 4 sum term expression. The 4 sum terms are a plus b bar plus c, a plus b bar plus d bar,
B plus C plus D bar and A bar plus B bar plus C bar plus D. We have seen several examples of mapping the product of sum expression directly onto a K-map. इसको जरा समराइज कर लें. ग्रुप्स के साइजेस कितने होंगे? अगर 3 वेरिएबल के मैप है, द लार्जेस्ट ग्रुप वुड बी ऑफ 8 सेल्स. अगर सारे मैक्स टर्म्स प्रेजेंट हैं तो आउटपुट क्या आएगा? बेसिकली 0 होगा, 1 नहीं होगा. 1 रिमेंबर, अगर 8 सेल्स होते फॉर ए 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड जो है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, उसका आउटपुट 1 आना था. फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन हो, सारे 8 मैक्स टर्म्स अवेलेबल हैं, 8 सेल्स बनेंगे, ग्रुप ऑफ 8 सेल्स बनेगा, आउटपुट हमेशा 0 होगी. वट एवर द इनपुट्स ए बी सी जो मर्जी चेंज करते रहे, आउटपुट हमेशा 0 होगी. नाउ इन ए 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप, अगर आपका 4 सेल्स का ग्रुप बनता है जिनमें 4 जीरोज हैं, तो आपके पास कितना सम टर्म, कितने वेरिएबल की सम टर्म आएगी? बेसिकली 1 वेरिएबल की आएगी. अगर 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप है, उसमें 2 सेल्स का ग्रुप बन रहा है, उसमें then you will get a sum term of 2 variables, and similarly a single cell group in a 3 variable Karnaugh map would give you a sum term of कितने variables का? 3 variables का. Now let us talk about a 4 variable Karnaugh map. 4 variable Karnaugh map में of course 16 cells होते हैं. मैक्सिमम मैक्स टर्म्स कितने हो सकते हैं? 16 के 16 हो सकते हैं. तो आपके पास एक ग्रुप ऑफ 16 सेल्स, आउटपुट क्या होगी? हमेशा 0 होगी, वट एवर दी इनपुट्स. उससे छोटा नेक्स्ट ग्रुप कितने साइज का हो सकता है? बेसिकली 8 सेल्स का होगा. 8 सेल्स में सारे जीरोस होने चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन. सो a 4 variable Karnaugh map having a group of 8 cells would give you a sum term of how many terms, variables? A single variable. इसी तरह अगर आपका 4 सेल्स का एक ग्रुप बन रहा है, how many variables are you going to have? You are going to have a sum term of 2 variables. 2 सेल्स का एक ग्रुप बन रहा है, again you would have a sum term of 3 variables. एंड अगर एक सिंगल सेल का ग्रुप बन रहा है 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप में, यू वुड हैव ए सम टर्म ऑफ 4 वेरिएबल्स. सो ये रूल्स जनरली याद रखिएगा. सो तकरीबन मोर लेस यही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, वही रूल्स आपके अप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. That is converting from a sum of product form expression into a product of some form of expression. If you look at a Karnaugh map, 3 variable, 4 variable, 5 variable का भी कह सकते हैं, या 2 variable का भी. Now a Karnaugh map would have zeros and ones. अगर आप ग्रुप बना लें जो ones का है, तो फिर आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की. अगर उसी कार्नोफ मैप में बजाय 1 जहां है उनका ग्रुप बनाए, जीरोस का ग्रुप बना लें, आपके पास क्या आएगी? वही फंक्शन आएगा रिप्रेजेंटेड इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. अगर ये जो अब 2 एक्सप्रेशंस आ रही हैं, एक जो है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, दूसरी एक्सप्रेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में. बेसिकली इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करें, ऑफ कोर्स 2 डिफरेंट सर्किट्स बनेंगे, उनका जो रिजल्ट है या जो फंक्शन है दोनों का एक जैसा होगा. राइट. सो बड़ी आसानी से हम एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग के मैप्स. फायदा क्या था? हमने क्या बात की थी पिछली दफा? बेसिकली कोई भी एक फंक्शन हो सकता है उसके कुछ जो उसके मिन टर्म्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इट्स मैक्स टर्म्स. सो अगर मैक्स टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन आप इंप्लीमेंट करें यूजिंग लॉजिक गेट्स, आपका सर्किट जो सिंपल हो सकता है उसमें. अगर मिन टर्म्स की फॉर्म में अगर इंप्लीमेंट करें, सर्किट आपका हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो. तो आप बड़ी आसानी से स्विच कर सकते हैं इन वन फॉर्म और टू द अदर टू इंप्लीमेंट सर्किट्स. लेट अस हैव अ लुक एट an example which shows this implementation, that is you switch from one form to the other. Consider the 4 variable Karnaugh map used to simplify the product of sum expression. The Karnaugh map shown has been used before to simplify a product of sum expression. There groups of zeros were formed which resulted in a 4-term expression. Using that same Karnaugh map, now groups of ones are formed instead of groups of zeros. So
Two groups of 4 cells and 3 groups of 2 cells are formed. The first group of ones comprising of cells 0, 2, 8 and 10 forms the product term B bar, D bar. The second group of ones comprising of cells 2, 3, 10 and 11 forms the product term B bar, C. The third group of ones comprising of cells 12 and 13 forms the product term A, B, C bar. The fourth group of ones comprising of cells 13 and 15 forms the product term A, B, D. The fifth group of ones comprising of cells 2 and 6 forms the product term A bar, C, D bar. Now, considering the simplified product of sum expression obtained from this K-map, if it is multiplied together, you will receive terms B bar, D bar plus B bar C plus A B C bar plus A B D plus A bar C D bar, which is of course equivalent to the sum of product form of the expression. In the last example, we just saw an example where we were able to convert from a standard sum of product form into a product of sum form using the K-map. K-map अगर आपके पास हो, आप आसानी से एक फॉर्म या दूसरी फॉर्म में आप एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं उसमें. Now, in the last lecture, we mentioned that you can also directly map the contents of a truth table onto a K-map. इधर भी क्या कर सकते हैं? Yes, बिल्कुल कर सकते हैं. Truth table के जो outputs हैं, zeros and ones, they have nothing to do with a sum of product expression or a product of sum expression. वो तो जब आप मैप कर लेते हैं के मैप में, उधर से जब आप एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वो आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हो सकती है या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में हो सकती है. सो सिंपली यू हैव ए फंक्शन टेबल, उसके आउटपुट्स हैं वो आप डायरेक्टली के मैप में डाल दें. नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, देन यू ग्रुप जीरोस, और उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगी. अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के एक्सप्रेशन में इंटरेस्टेड हैं, देन यू ग्रुप वंस, और वो जो वंस हैं वो आपको प्रोडक्ट टर्म्स दे देंगे. लेट अस टॉक अबाउट ए 5 वेरिएबल कार्नोफ मैप. 5 वेरिएबल कार्नोफ मैप कहां यूज होगा? बेसिकली एक्सप्रेशंस हैविंग 5 वेरिएबल्स. 5 वेरिएबल कार्नोफ मैप के कितने सेल्स होंगे? बेसिकली इट्स 2 raised to power 5, 32 सेल्स होंगे. अब 32 सेल्स का कार्नोफ मैप बनाना पेपर पे भी बड़ा मुश्किल काम है, उसमें काफी बड़ा साइज हो जाएगा उसमें. सो इसको कैसे बनाएंगे? और दूसरी बात ये ना, इन 32 सेल कार्नोफ मैप जब बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे, उधर से ये भी रियलाइज करना कि कौन सा ग्रुप कहां बन रहा है वो भी मुश्किल हो जाएगा. सो टू रिप्रेजेंट ए 32-bit 5 वेरिएबल कार्नोफ मैप in a concise or a compact form, you would use 2 4 variable Karnaugh maps. ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली लेट्स सपोज यू हैव ए 4 वेरिएबल Karnaugh मैप जिसके 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं. उस Karnaugh मैप को आप कह दें कि ये बेसिकली a equals to 0 वेरिएबल के लिए. दैट मीन्स a 0 हो तो ये वाला आप मैप इस्तेमाल करें. आपके पास एक आइडेंटिकल मैप होगा अगेन ऑफ 16 सेल्स, 16 रोज, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, और इस मैप को आप कहेंगे फॉर a इक्वल्स टू 1. सो दैट मीन्स यू हैव 2 4 into 4 मैप्स. एक जो मैप है a इक्वल्स टू 0 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा a इक्वल्स टू 1 के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, अब 4 into 4 के 2 आपके पास मैप्स हैं. टोटल सेल्स कितने हो गए? 32. पर ये आप 2 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, अब नेक्स्ट काम क्या करना है? बेसिकली आपके पास कोई भी फंक्शन है या कोई भी एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई करना है. यू वुड फर्स्ट ऑफ ऑल मैप दैट फंक्शन और दैट एक्सप्रेशन ऑन टू दी 5 वेरिएबल के मैप. तो जो वंस हैं या जीरोज हैं दोनों मैप्स में आ जाएंगे. a इक्वल्स टू 0 वाला जो मैप है और a इक्वल्स टू 1 वाला मैप दोनों में आ जाएंगे. ग्रुप्स कैसे फॉर्म करेंगे? अगेन ग्रुप का वही रूल है, बेसिकली पावर्स ऑफ 2. तो सबसे बड़ा ग्रुप किस साइज का हो सकता है इस केस में? बेसिकली 32 सेल्स का. तो 16 सेल ऊपर वाले, 16 सेल नीचे वाले, दे फॉर्म ए कंप्लीट ग्रुप ऑफ 32 सेल्स. अगर सारे 32 सेल्स वंस हैं, आपके पास क्या आउटपुट आएगी?
اگر آپ سم آف پروڈکٹ فارم کی بات کر رہے ہیں من ٹرمز جو ہیں, بیسکلی دی آؤٹ پٹ وڈ بی 1. سو اے بی سی ڈی ای 5 ویریبلز ہیں نا, کوئی بھی ان پٹ کمبینیشن ہو آپ کا آؤٹ پٹ ہمیشہ 1 رہے گا. اف یو ہیو اے گروپ آف 16 cells, رائٹ, تو آپ کے پاس ایکسپریشن کیا آئے گی, لیٹس سے 16 ونز ہیں, آپ سم آف پروڈکٹ فارم میں انٹرسٹڈ ہیں, تو آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ٹرم آئے گی جس کا ایک ہی ویریبل ہوگا. اگین یو ہیو اے گروپ آف 8 cells, پھر کتنا ہوگا, بیسکلی 2 ویریبلز ہو جائیں گے, اور سملرلی آپ 4 کا بھی گروپ ہوگا, 2 کا بھی ہوگا, اور 1 cell کا بھی ہوگا. گروپس جو ہیں بیسکلی اب 2 ڈائمینشن میں فارم ہو رہے ہیں, اوپر بھی کچھ ونز ہوں گے, نیچے بھی ہوں گے. سو یو کوڈ ہیو 2 cells لیٹس سے ان دی اپر plane, 2 cells in the lower plane. So if you have 2 ones in the upper 2 cells and 2 ones in the lower 2 cells, you form a group of 4, right? So a group spans both the planes. Let us now have a look at an example where you are going to be seeing different groups. Let us first consider a 5 variable Karnaugh map. It has 2 planes of 16 cells each. The first plane, where variable a is equal to 0, has cells 0 to 15 as shown on the Karnaugh map. The second plane, where a equals to 1, has cells from 16 to 31. Let us consider the plane a equals to 0. There are cells marked with 6 ones. Now let us consider the other plane a equals to 1. The plane a equals to 1 has 8 cells marked with 1s. Now, how many groups are formed and what are the sizes of different groups? Let us have a look. Starting with a equal to 0 map, the cells 1 and 5 form a group of 2 cells. These 2 cells, along with the cells 17 and 21 in map a equals to 1, form a group of 4 cells. This group of 4 cells represents the term B bar, D bar, E. Now consider the cell 2 in map A equals to 0. Cell 2 does not form a group with any adjacent cells. Therefore, it is a group of single cell having the product term A bar, B bar, C bar, D, E bar. It has 5 variables. Now consider the cells 10 and 11 in map A equals to 0. These 2 cells form a group of 4 with adjacent cells 26 and 27 in map A equals to 1. Therefore, the group of 4 cells represents the product term B, C bar, D. Similarly, the cells 10 and 14 in map A equals to 0 and cells 26 and 30 represent a group of 4 cells representing the product term B, D, E bar. Now, considering the map A equals to 1, the 4 cells 16, 17, 20 and 21 represent the product term A, B bar, D bar. The cell 25 along with cell 27 in map A equals to 1 represents the product term A, B, C bar, E. We have looked at an example of a 5 variable Karnaugh map. Groups اس میں اسی طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں جس طرح ہم نے 3 ویریبل اینڈ 4 ویریبل میں کیا تھا. گروپ سائزز بھی ہم نے بتایا تھا پاورز آف 2 ہونا چاہیے. Now it is difficult to perceive a 2-dimensional Karnaugh map. اس میں غلطی کے امکان زیادہ ہیں اس میں. So you have to be very careful when you use a 5 variable Karnaugh map. Now let us talk about simplifying a 5 variable Karnaugh map. کیسے کریں گے؟ اگین بالکل ایگزیکٹلی وہی طریقہ ہے جو پہلے آپ 3 ویریبل اینڈ 4 ویریبل کے ساتھ کرتے رہیں. سو کیا ہوگا؟ وہی گروپس بنائیں, گروپس ڈفرنٹ سیلس کے 2 کا, 4 کا, 8 کا, 16 کا, 32 کا. سب سے پہلے کون سا گروپ ہونا چاہیے؟ دی لارجسٹ گروپ. اگر 32 کا بنتا ہے فائن, آئیڈیلی 32 کا نہیں ہوگا. سو یو اسٹارٹ بائی فارمنگ اے گروپ آف 16 سیلس. 16 کا بنتا ہے, اس کے بعد 8 کا یا مزید 16 کا اگر کوئی بن سکتا ہے. سو یو اسٹارٹ ود دی لارجسٹ گروپ اینڈ یو گو ٹوورڈز دی اسمالسٹ گروپ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر جو گروپ ہے اس میں یونیک ونز ہونے چاہیے. اس میں کوئی ایسا گروپ نہیں ہو جو ونز ہیں ملٹیپل گروپس میں آ رہے ہوں اور یونیکنیس نہیں ہو. ٹھیک ہے, ہر گروپ میں یونیک کمبینیشن آف ونز کا ہونا ضروری ہے. اگین 5 ویریبل جو Karnaugh میپ ہے یہ آپ
सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स के एक्सप्रेशन तो निकाल सकते हैं बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ वंस. क्या आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं? यस यू कैन. ऑफ कोर्स वही जो ग्रुप्स आप बना रहे हैं वंस के, आप जीरो के अगर ग्रुप्स बना दें उसमें, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा, आपके पास सम टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी इसमें. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस. शुरू हमने बात की थी बूलियन अलजेब्रा के रूल्स अपने अप्लाई करने हैं. उसके बाद हमने बात की थी कि आपने कार्नोफ मैप्स के थ्रू करना है. सो कार्नोफ मैप्स प्रोवाइड यू विद एन इजियर सिस्टमैटिक वे ऑफ सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस. 6 वेरिएबल की अगर एक्सप्रेशन आपके पास हो तो कार्नोफ मैप से कर पाएंगे. हमने अभी बात की कि 5 वेरिएबल का जो कार्नोफ मैप है उसको भी बनाना जरा 32 जिसके सेल्स हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 2 डायमेंशनल में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इसी तरह अगर 6-7 वेरिएबल का होगा तो वो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक नए तरीके की विच वी यूज टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस ऑफ मोर देन 5 वेरिएबल्स. और वो जो तरीका है वो एक प्रोग्रामिंग का तरीका है. बेसिकली यू कैन प्रोग्राम ए कंप्यूटर और वो आपको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस निकाल के दे देगा उसमें. तो वो मैनुअली बेसिकली नहीं किया जाता, तो प्रोग्राम फॉर्म में मेथड को यूज किया जाता है. तो बहरहाल ये तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस एंड इम्प्लीमेंटिंग ए सर्किट. अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स देखी उसमें आउटपुट जो था सर्किट का, कितने आउटपुट्स थे? बेसिकली हम एक ही आउटपुट की बात कर रहे थे. हमारे पास 4 इनपुट्स हैं जिससे 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं. आउटपुट हमेशा हमने 1 ही रखा है. या 3 वेरिएबल्स हैं, 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, आउटपुट हमेशा 1 ही रहा है, जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है इसमें. नाउ प्रैक्टिकल सर्किट्स डू हैव मोर देन सिंगल आउटपुट. उसके 4 आउटपुट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं इसमें. अब इस किस्म के सर्किट्स को कैसे हम बनाएंगे, उसका फंक्शन पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसमें. सो 2 चीजें. सो पहले तो हम बात करते हैं कि इसके आउटपुट जो है सर्किट के जो डिफरेंट आउटपुट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक फंक्शन टेबल की फॉर्म में. फंक्शन टेबल जब भी हमको मिल जाएगा बना लेंगे. उसके बाद हमने क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट फंक्शन टेबल यूजिंग ए कार्नोफ मैप. कार्नोफ मैप हमें क्या देगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस होंगी. सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से हम सर्किट बना देंगे इसमें. नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर एन एग्जांपल. एग्जांपल कौन सी है? जो हमने शुरू में एक लेक्चर में बात की थी 7 सेगमेंट डिस्प्लेस. जो आप रेलवे स्टेशन जाएं उधर आपको एक डिजिटल क्लॉक नजर आएगी, बसों में सामने डिजिटल क्लॉक नजर आती है. डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिजिट होता है. एक डिजिट है जो 8 की फॉर्म में है और उस पे आप डिफरेंट डिजिट्स 0 to 9 डिस्प्ले कर सकते हैं उसमें. इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को अगर आप गौर से देखें, इसमें 7 सेगमेंट्स हैं, इसलिए इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं. इसका डायग्राम भी हम देखेंगे. बहरहाल इसमें 3 हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स हैं और 4 वर्टिकल सेगमेंट्स हैं. सो अगर कोई भी डिजिट, लेट्स से डिजिट 3 डिस्प्ले करना है तो वो 3 जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स हैं उनको ऑन करते हैं और 2 जो राइट साइड पे वर्टिकल सेगमेंट्स हैं उनको ऑन कर देते हैं. यू सी ए डिजिट 3. सिमिलरली अगर डिजिट 0 डिस्प्ले करना है तो ऊपर वाला सेगमेंट जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है उसको ऑन कर देंगे और 2 जो वर्टिकल सेगमेंट्स हैं लेफ्ट साइड पे और 2 वर्टिकल सेगमेंट्स जो है राइट साइड पे उनको भी ऑन कर देंगे. यू सी ए डिजिट 0. राइट. So when you need to display any number between 0 to 9, you would be turning on a combination of these segments. कितने सेगमेंट्स हमने बताए हैं, अगर इनको काउंट करें तो ये आपके पास 7 सेगमेंट्स आ जाते हैं. राइट. सो लेट्स सपोज जो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है वो किन नंबर्स के लिए ऑन होगा. लेट्स से 0 अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो उस सेगमेंट को ऑन करना पड़ेगा. 1 के लिए ऑन करना पड़ेगा? नहीं, 1 के लिए ऑन नहीं करना पड़ेगा. इसी तरह अगर आप 2 डिस्प्ले कर रहे हैं उस सेगमेंट को ऑन करना पड़ेगा. 3 के लिए भी करना पड़ेगा, 4 के लिए नहीं करना पड़ेगा, एंड सो ऑन. सो बेसिकली you first of all need to implement a function table of this 7 segment display. फंक्शन टेबल में कितने इनपुट्स होंगे और कितने आउटपुट्स होंगे. नाउ ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसको लेट्स से आप 3 डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो बाइनरी कोड क्या भेजेंगे. बेसिकली आप BCD कोड भेज रहे हैं क्योंकि हमने बताया है BCD कोड जो है नंबर 0 से 9 तक डिस्प्ले करता है. सो BCD कोड
میں جو نمبر ہیں 1010 جو 10 ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا یا وہ بیسکلی انویلڈ ہے, رائٹ. سو 4 بٹ کے نمبرز اسٹارٹنگ فرام 0000 ٹو 1001 ہم بھیجیں گے اور ان سے ایک آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی یا ملٹیپل آؤٹ پٹس جنریٹ ہوں گی جو 7 سیگمنٹ کو کنٹرول کریں گی. سو آپ کا جو سرکٹ ہے اس کے 4 ان پٹس ہوں گے جہاں آپ بی سی ڈی نمبر بھیج رہے ہیں. آؤٹ پٹس کتنے ہوں گے؟ اس کے 7 آؤٹ پٹس ہوں گے جو ہر سیگمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. تو لیٹس سپوز یو ڈسپلے دی نمبر 0. ان پٹ پہ کیا بھیجیں گے؟ 0000. آؤٹ پٹ پہ کیا آنا چاہیے؟ بیسکلی جو 7 سیگمنٹ ڈسپلے اگر آپ دیکھیں اس میں جو بیچ والا سیگمنٹ ہے جس کو سیگمنٹ جی کہتے ہیں وہ آف ہوگا, باقی سیگمنٹ سارے جو ہیں 6 کے 6 وہ آن ہونے چاہیے. تو جو سرکٹ کی آؤٹ پٹ ہے جس کے 7 آؤٹ پٹس ہیں ان میں سے 6 جو آؤٹ پٹس ہیں وہ 1 ہونے چاہیے, ایک جو آؤٹ پٹ ہے وہ 0 ہونا چاہیے. اسی طرح لیٹس سپوز یو نیڈ ٹو ڈسپلے دی نمبر 1 آن دیٹ 7 سیگمنٹ ڈسپلے. آپ کے سرکٹ کے ان پٹ پہ کیا ہوگا؟ بی سی ڈی نمبر 0001. آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا؟ آؤٹ پٹ ایز وی ہیو جسٹ سیٹ 7 آؤٹ پٹس ہیں, ان میں سے 2 سیگمنٹس جو ہیں وہ آن کرنے ہیں, باقی 5 سیگمنٹس آف کرنے ہیں. سو وہ جو 2 سیگمنٹس ہیں وچ ریپرزینٹ دی نمبر 1 دے آر گوئنگ ٹو بی ٹرنڈ آن, باقی 5 سیگمنٹس دے آر گوئنگ ٹو بی زیروز اور ٹرنڈ آف. Let us try to implement the functions for this particular circuit which has 4 inputs and 7 outputs. Let's represent the 7 outputs with symbols small a, small b, small c, d, e, f and g. These 7 symbols represent the 7 segments of a 7 segment display. کتنے فنکشن ٹیبلز ہوں گے آپ کے خیال میں؟ فنکشن ٹیبل ہم نے جیسے شروع میں بات کی تھی, ہر فنکشن ٹیبل کا ایک ہی آؤٹ پٹ ہوگا, ملٹیپل ان پٹس ہو سکتے ہیں. اگر 3 ویریبل ان پٹس ہیں, 3 ان پٹس ہیں, 3 ویریبلز ہیں, 8 کمبینیشنز آف ان پٹس ہوں گی, آؤٹ پٹ ہمیشہ 1 ہوگا. اس پرٹیکولر سرکٹ میں 7 آؤٹ پٹ ہیں, سو آپ کو 7 ڈفرنٹ فنکشن ٹیبل بنانے ہوں گے. ایچ فنکشن ٹیبل وڈ گیو یو دی آؤٹ پٹ فار ایچ سیگمنٹ. سو سیگمنٹ اے کے لیے ایک فنکشن ٹیبل ہوگا, سیگمنٹ بی کے لیے علیحدہ ہوگا, اسی طرح سی, ڈی, ای, ایف اینڈ جی. ان سارے فنکشن ٹیبلز میں ان پٹس کتنے ہوں گے, کتنے ویریبلس ہوں گے؟ آپ کے سرکٹ کے ان پٹس کتنے ہیں؟ 4 بٹ بی سی ڈی نمبر ہے. سو فنکشن ٹیبلز جتنے بھی 7 آپ کے بنیں گے, ان پٹ کمبینیشن 4 ہوں گی. ان پٹ کمبینیشن کتنی ہو جائیں گی؟ 16 ہو جائیں گی. Now, since we are using a BCD number to display a digit on the 7 segment display, ان میں سے کون سی کمبینیشنز ڈونٹ کیئر ہوں گی یا کبھی آئیں گی نہیں یا انویلڈ ہوگی, کبھی آپ یوز نہیں کریں گے؟ بیسکلی وہی والی بی سی ڈی والی بات ہے. 0 سے لے کے 9 تک ویلڈ نمبرز ہیں, 10, 11, 12, 13, 14 اینڈ 15 وہ انویلڈ ہیں, کبھی بھی آپ ان پٹ پہ اپلائی نہیں کریں گے, رائٹ. فنکشن ٹیبل میں ان پٹس کے لیے آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا؟ ایکس ہوگا. جو باقی پہلے 10 کمبینیشنز ہیں 0 to 9, ان کے آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا؟ بیسکلی زیروز اینڈ ونز ہوں گے. 1 کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ 1 بیسکلی وڈ ریپرزینٹ دی نمبر فار وچ دیٹ پرٹیکولر سیگمنٹ ہیز ٹو بی ٹرنڈ آن, رائٹ. سو فار ایگزامپل آپ کا فنکشن ہے فار سیگمنٹ اے, رائٹ, جو ٹاپ ہاریزونٹل سیگمنٹ ہے. آپ نے نمبر 0 ڈسپلے کرنا ہے. سو فنکشن ٹیبل جو ہوگا فار سیگمنٹ اے, آؤٹ پٹ پہ اے آ رہا ہے, فار کمبینیشن 0 0 0 0 دی آؤٹ پٹ وڈ بی اے 1. یس. سو لیٹ اس ہیو اے لک آل دیز فنکشن ٹیبلز, اور اس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں فنکشن ٹیبل کی جو انفارمیشن ہے ٹو میپ اٹ ڈائریکٹلی انٹو اے کے میپ, اور کے میپ سے ہم ایکسپریشنز ایکسٹریکٹ کریں گی. آپ کے خیال میں کتنی ایکسپریشنز آئیں گی؟ 7 آپ کے پاس فنکشن ٹیبلز ہیں, 7 کائنڈ آف میپس ہوں گے. کتنے ویریبل کے ہونے چاہیے؟ 4 ویریبل کے ہونے چاہیے. سو 7 کے میپس 4 ویریبل کے. ایکسپریشنز کتنی آ جائیں گی؟ آف کورس 7 کائنڈ آف میپس ہیں, 7 ایکسپریشنز آئیں گی. سرکٹ کیا بنے گا؟ 7 ڈفرنٹ سرکٹس بنیں گے, جو جن ساروں کے ان پٹس جو ہیں وہ 4 ان پٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. ان سارے سرکٹس کے 7 سرکٹس کے آؤٹ پٹ جو ہیں وہ ہر سیگمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا.
So let us have a look at the function tables and then the Karnaugh maps. Let us first consider the 7-segment display. It is shaped like the number 8. It has 7 segments that can be lit in different combinations to display any digit between 0 to 9. The 7 segments are identified by segment numbers A, B, C, D, E, F, and G. The 3 horizontal segments starting from the top are A, G, and D respectively. The 2 vertical segments on the right side are segments B and C. The 2 vertical segments on the left side starting from the top segment are segments F and A. Now, to display the numbers 0 to 9, different sets of segments are turned on. For example, to display 0, segments A, B, C, D, E, and F are turned on. To display the number 1, segments B and C are turned on. To display the number 2, segments A, B, D, E, and G are turned on. To display the number 9, segments A, B, C, D, F, and G have to be turned on. Now, the next thing which you need to determine is for which combination of digits does the segment A needs to be turned on. For example, segment A is turned on when numbers 0, 2, 3, 5, 6, 7, and 8 are displayed. Segment D, for example, is turned on when the numbers 0, 2, 3, 5, 6, and 8 are displayed. Similarly, different sets of segments are selected to display different digits. The 7-segment display circuit basically can be considered to be 7 different circuits having 4 inputs and 1 output. The 4-bit input of the circuit accepts BCD numbers and the output controls a single segment. Before implementing the 7 circuits, function tables for each of the 7 circuits have to be prepared. Let us have a look at the function tables. Consider the function table for segment A. It has 4 inputs which represent the BCD number, 4-bit BCD number. The total possible input combinations are 16. Since the BCD number has valid states from 0000 to 1001, therefore the remaining states starting from 1010 to 1111 are represented by X. That means don't care. Now let us look at the output of the function table. The output is represented by small a instead of F. Why? Because small a represents segment A. Now when the number 0 is displayed, segment A should be turned on. Therefore the output is set to 1. Similarly, when numbers 2 and 3 are displayed, segment A should be turned on. Therefore at the output you have 1s. Similarly for numbers 5, 6, and 7, the output is 1. And for numbers 8 and 9, the output is again 1. Let us have a look at the function table for segment B. Function table for segment B is similar to the function table for segment A. Again, 4 inputs and a single output. The output is of course represented by B, which represents segment B. Now, for the input combinations 0, 1, 2, and 3, and 4, the outputs are 1. That means for the numbers 0, 1, 2, 3, and 4, segment B has to be turned on. Similarly, for displaying numbers 7, 8, and 9, segment B again has to be turned on. So, in the function table, the output for numbers 7, 8, and 9, B is set to 1. The remaining 6 outputs are set to X, which means don't care. These states would never occur. Let us look at the function table for segment G, the 7th segment. Again, 4 inputs, single output. The output is represented by G, representing the segment G, of course. Now, you see 1s for the input combination 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 9. This means that segment G has to be turned on for these combination of inputs. Remaining combination of inputs do not require the segment G to be turned off, therefore they are set to zeros. Again, the states 1010 to 1111 are don't care. They are marked as X's or crosses
in the function table. Now, in order to implement the function table, we need to find the simple expression for segment A. How do we do that? We directly map the function table for segment A to a 4-variable Karnaugh map. Why a 4-variable? Because the domain of the expression is 4. 4-bit BCD number is being used. Now, if you have a look at the 4-variable Karnaugh map for segment A, several groups are formed. The expression is simplified to give the following terms: A plus C plus BD plus B bar D bar. If the function table for segment B is mapped to a separate 4-variable Karnaugh map, we obtain the simplified expression B bar plus C bar D bar plus C D. Finally, when the function table for segment G is mapped to, again, a separate 4-variable Karnaugh map, we get the simplified output as A plus B C bar plus C D bar plus B bar C. We have looked at 3 function tables for the segment A, B, and G. Similarly, we have looked at 3 Karnaugh maps where we have simplified the 3 function tables A, B, and G. ان 3 Karnaugh میپ سے ہمارے پاس 3 ڈفرنٹ ایکسپریشنس مل گئی ہیں. اب 3 ڈفرنٹ ایکسپریشنس کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی امپلیمنٹ کریں گے یوزنگ لاجک گیٹس. ہر سرکٹ کا ایک آؤٹ پٹ ہوگا, وہ کس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے؟ ویل, اے کی جو ایکسپریشن ہے, سیگمنٹ اے کی جو ایکسپریشن ہے, اس کے سرکٹ کی آؤٹ پٹ جو ہے آپ کس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے؟ سیگمنٹ اے کے ساتھ. اسی طرح سرکٹ جو آپ بنائیں گے, امپلیمنٹ کریں گے فار سیگمنٹ بی, اس کی آؤٹ پٹ آپ سیگمنٹ بی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. سملرلی دی سرکٹ وچ یو امپلیمنٹ فار سیگمنٹ جی ہیز ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دی آؤٹ پٹ آف سیگمنٹ جی. ان سارے سرکٹس کی ان پٹس جو ہیں وہ آپس میں آپ نے جوڑ دینی ہے, اینڈ دے وڈ بی کنیکٹڈ ٹو دی بی سی ڈی ان پٹ, جو 4-bit کا نمبر آپ اپلائی کر رہے ہیں. رائٹ. سو نیکسٹ ٹائم ہم ایک اور سرکٹ کو دیکھیں گے, سیم فنکشن ٹیبلز بنائیں گے, ملٹیپل آؤٹ پٹس ہوں گے. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دی Karnaugh میپ میتھڈ آف سمپلیفائنگ ایکسپریشنس. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم دوسرا میتھڈ دیکھیں گے جو ہم یوز کریں گے ٹو سالو ایکسپریشنز ہیونگ مور دین 5 ویریبلس. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم.